Hi everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guide by NCERT. Today in this video we are going to study the ready-made printable solution of workbook Golden Class 4 English. Name of the chapter is NEHA'S alarm clock. Students, teachers and parents, if you are new, I would like to request you please subscribe the channel, click the bell icon, उसको like कर दीजिए, share कर दीजिए, so instantly basis से notification will reach you whenever I upload new videos for you, because each and every day we are uploading new videos of different chapters, different subjects. Today we are going to study the entire ready-made printable solution of workbook Golden Class 4 English. Name of the chapter is NEHA'S alarm clock, adapted from NEHA'S alarm clock by Girija Rani Asthana. Students, I think that you have already gone through the chapters. Okay, so we have already provided you Arya Publishing Company APC workbook printable solutions and the worksheet, the recorded worksheet that is published by NCERT. Already printable ready-made solution we have given you. Now we are going to give you the workbook of Golden Marigold ready-made printable solutions. Okay, first of all I like to request you is just read out this chapter thoroughly. After this, one by one you just coming in these workbook sessions. Okay, let's start the chapter. Question number 1, what does नेहा love to do? What does नेहा love to do? नेहा कौन सा काम करने के लिए पसंद करती है? The correct answer would be नेहा loves to sleep a little longer in the morning. मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा सोने का आदत है उनको, तो दैट्स वाई सी लव्स टू स्लीप. ठीक है, सी लव्स टू स्लीप लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. ठीक है, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज नेहा रिएक्ट ऑन ईच वेक अप कॉल? The correct answer will be Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket on each wake up call. ठीक है बच्चों. Now question number 3, who wakes her up at the third time? थर्ड टाइम में कौन उसको जगाया? The correct answer will be sun. Sun wakes her up at the third time. ठीक है बच्चों. Now next question क्या देखो, what happens, क्या हुआ था if you do not reach your school in time? अगर आप टाइम में स्कूल नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा आपको पता ही है, बिकॉज ऐसा सिचुएशन आपको भी हुआ है. स्कूल गेट्स बिकम्स क्लोज, स्कूल का जो दरवाज़ा है, जो डोर्स है वो क्लोज हो जाता है. फिर रिक्वेस्ट करना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है किस कारण में आपको लेट कमिंग हुआ है. ठीक है, तो नेहा को भी सेम सिचुएशन हो सकता है. दैट्स वाई सी वाज हरी अप टू रीच द स्कूल. ठीक है बच्चों. Now question number 5, read your lesson carefully and write down what do you mean by the sentences given below in the space provided. Alarm clock goes ringing starts at 6. The clock starts ringing at 6 a.m. for waking up early in the morning and make ready for her school. Next, Neha gets up suddenly. Neha wakes up suddenly, realizing it is late for her to reach school in time and the alarm clock had started ringing. Question number C, even this wish of Neha's fulfills. क्या होगा? Even this wish of Neha's comes true. Actually, she wants to sleep a little longer. ठीक है, ए लिटिल लॉन्गर टाइम वो सोने के लिए इच्छा किया है. नेक्स्ट, आई शुड मेक ए हरी नाउ. करेक्ट आंसर भी आई शुड रश नाउ. आई शुड मेक ए हेस्ट अनलेस शी विल मिस द स्कूल बस. ओके. नेक्स्ट, ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप ए लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. करेक्ट आंसर भी नेहा सेड दिस बिकॉज शी डज नॉट लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग. ठीक है बच्चों. Now question number 6, देखो क्या दिया है पे. Which of the things do you love to do the most as Neha loves to sleep a little longer in the morning? कौन सा वाला चीज़ आप भी पसंद करती हो ज़्यादा? Write at least 4 sentences. देखो अगर पिक्चर क्लैरिटी ठीक नहीं हुआ तो टच करके सेटिंग में जाके इसको 1080 पिक्सल क्वालिटी कर दो. सो आई थिंक दैट यू कैन गेट ए गुड पिक्चर फॉर दैट. ठीक है बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर A, how now I would love to play a little longer in the morning. B, how now I would love to write a little longer in the morning. C, how now I would love to listen music a little longer in the evening.
Next D. Oh, now I would love to watch TV a little longer in the evening. आप भी टीवी देखना पसंद करते हो, टेलीविज़न देखना पसंद करते हो, बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारी चीज़ है, गेम्स है आप पसंद करते हो, तो ऐसा वैसा सेम होगा ना। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू नो मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मील एंड हेल्थ? तो कौन सा है? We must drink full glass of milk at least twice a day. Find out and write its important in the first column and some product made from it in the second column. One is done for you. देखो बच्चों, मिल्क इज हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम, बहुत सारा कैल्शियम रहता है। बटर, इट रिड्यूस रिस्क ऑफ ओबेसिटी, ये मोटापा दूर करता है। इट हेल्प्स मेक्स योर टीथ एंड हेल्दी, इसको टीथ एंड हेल्दी रखता है, टीथ ठीक रखता है, हेल्दी रखता है। इट इम्प्रूव्स बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। कौन सा यहाँ पे मिल्क से तैयार होता है? घी, पनीर, कर्ड, ऐसा चीज़ तैयार होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट दिस सेंटेंस केयरफुली। नेहा स्माइल्स, राहुल स्माइल्स, नेहा एंड राहुल स्माइल्स, सी स्माइल्स। देखो चेंज कैसे हुआ, जब दोनों एक साथ बोलते हैं तो प्लूरल हो जाता है, तो स्माइल हो गया, स्पेस ऐड नहीं हुआ है। ही स्माइल्स, दे स्माइल। ठीक है बच्चों, देखो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एक्शन वर्ड। क्या होगा, कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिया है, कौन सा वाला होगा इसमें, ये जो ऐड होगा कि नहीं होगा आपको ठीक करना। रिद्धिमा सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर वेक्स, वेक्स अप। स्वीटी वांट्स, मोनू एंड सोनू क्या होगा, मोनू एंड सोनू प्लूरल हो गया, एंटर होगा ये पे। रीना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, प्रेज, सी ईट्स। ठीक है बच्चों, ही वॉचेस क्रिकेट ऑन टेलीविजन, सी वॉचेस क्रिकेट ऑन टेलीविजन। तारा, इट विल बी लाइक्स हर टीचर वेरी मच। एच, दे गो ना गोज, कौन सा वाला होगा बताओ बच्चों? यस राइट, दे गो होगा। आई नीड, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम। ठीक है बच्चों, ना फन एक्टिविटीज तो आप पसंद करती हो। अगर यहाँ पे बोले 7 बजे आप दिखाओ, एक तो वाज दिया है, आप दिखाओ 7 बजे, छोटा कांटा कहाँ होगा, बड़ा कांटा कहाँ होगा, आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जा सो किया, जैसे कि देखो 6 बजे नींद से उठाए, उसके बाद 7 बजे स्कूल के लिए रवाना हो रहा है, 10 बजे यहाँ पे स्टडी चल रहा है ना, उसके बाद अच्छा ए बी राइट साइड में क्या है कि देखो 5 मिनट पहले क्या रेडी हो रहा है स्कूल के लिए, ऐसा हम आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, नाउ 10 क्या ब्रेकफास्ट कुछ दिया है यहाँ पे। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस, आई ईट कॉर्नफ्लेक्स एंड दही इन माई ब्रेकफास्ट, समटाइम्स आई लाइक टू ईट राइस एंड करीज इन माई ब्रेकफास्ट, आई डू नॉट लाइक जंक फूड्स टू ईट एंड ड्रिंक्स। बच्चों आई थिंक दैट यू ऑल्सो डिड नॉट लाइक द जंक फूड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आई थिंक दैट इज लाइक द वीडियो, लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, द बेल आइकन उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सो इंस्टेंटली बेसिस से नोटिफिकेशन रीच यू। ठीक है बच्चों, बिकॉज वी आर कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन एंड द टॉपिक्स एंड द सब्जेक्ट्स दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू student. This is the golden workbook solutions, printable ready-made solutions. Already we have given the APC Arya Publishing Company's printable ready-made solutions. आपको वर्कशीट भी दिया है, तो एक एक करके आप स्टडी करके रखो, आप नोट करके रखो, सो आपको एग्जाम के टाइम में आप गो थ्रू कर पाओगे इजीली। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके इसको नोट करके रखिएगा। आपको बुक्स जो है पेंसिल से, नहीं तो पेन से आप नोट करके रखिएगा, तो एग्जाम के टाइम में आपको हेल्प होगा, ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी आर कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो सेशंस विद द टॉपिक एंड द सब्जेक्ट। थैंक यू।